Assalamu alaikum class 4 students. Hope you all are doing well and you are fine, safe and healthy. Let's learn Unit 2, Lesson 2, page number 9. Open your textbook and open page number 9. Unit 2, Lesson 2, words. Here 2 words we will use and we will fill these blanks. The first thing we have to do. The second thing that you are asked to do is you will match these sentences with pictures given. So let's learn first 2 words that we are going to use and we are going to fill our blanks with those 2 words. First is should, means करना चाहिए. Second is shouldn't or should not, means नहीं करना चाहिए. The first sentence, there are couple of sentences given with each number. 2 sentences are given for each. Okay, one we will use should and in second sentence we will use should not. Now students, we will decide this thing by ourselves that where we will use should and where we will use shouldn't. Okay, let's start. We dash kill wild animals. हमें मारना चाहिए जंगली जानवरों को या नहीं मारना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? हमें जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहिए. सो व्हाट वी विल राइट? वी शुडंट किल वाइल्ड एनिमल्स. वेरी गुड. द सेकेंड सेंटेंस, वी डैश प्रोटेक्ट देम. वी शुड और वी शुडंट प्रोटेक्ट देम. डेफिनेटली वी शुड प्रोटेक्ट देम. नंबर 2, we should or we shouldn't cut down trees. we हमें दरख्त काटने चाहिए या काटने नहीं चाहिए? we shouldn't cut down trees. हमें दरख्त काटने नहीं चाहिए. Number 2, the second B part, we should plant lots of young trees. और हमें बहुत सारे नए पौधे लगाने चाहिए या नहीं चाहिए? Definitely we should. Number 3, we should or we shouldn't collect rubbish. हमें नीचे से या पार्क्स में से या ज़मीन पर से जो किचरा है वो उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? we should collect rubbish. Number 3, we shouldn't throw it into the street. हमें कचरे को गली में नहीं फेंकना चाहिए. Number 4, we should conserve water. हमें पानी को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए या उसे बचाना चाहिए, महफूज करना चाहिए. बट वी शुडंट वेस्ट इट. हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए. नंबर 5, वी शुड रिपेयर ओल्ड बिल्डिंग्स. हमें पुरानी इमारतों की मरम्मत करनी चाहिए. वी शुडंट डिस्ट्रॉय ओल्ड बिल्डिंग्स. हमें पुरानी इमारतों को तबाह नहीं करना चाहिए. So students, these are all blanks. 10 total blanks are there. In some blanks we will use word should and some blanks we will use word shouldn't. This is very easy. I think you'll do it easily. Now let's see the key of this exercise. Now you will tally your answers with this solved exercise and you will check you have done it right or wrong. Now students, we will match these sentences with pictures. We shouldn't kill wild animals. You will match it with the deer given here. Second is, we shouldn't cut down trees. Picture number C. First you give numbers to these pictures as I have given. To deer A, to this person planting young plants B, then cutting down of trees C, then this water, conserving water D, then is we should not destroy old buildings E, then is throwing rubbish F, then is repairing old buildings G, and then is collecting rubbish H. Okay, so with number 1 you will match with A. Number 2 sentence, in number 2 the first sentence you will match with C, people cutting down trees, and the second sentence of number 2 you will match with B, planting young trees. Number 3rd sentence, we should collect rubbish. You will see the last picture, H picture. You will match it with H. He is collecting the rubbish. Then the second sentence of number 3rd, you will match with F.
where the person is throwing. We shouldn't throw, but he is throwing. Okay, so you will match it with F. We should conserve water. There is a river. As you can see, this is a dam like thing. हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें बाद में. We shouldn't waste it. Okay. Now number 5, we should repair old buildings. Where is it? It is number G. Okay, and then we shouldn't destroy old buildings. You will match number 5, number 2 sentence with, in 5th number, the second sentence with E. We had differentiated between picture number G and E, because in E picture there is a crane, and crane is used to destroy things. Okay, so that is why the second part of 5th sentence we will match with E. I hope you understood. On page number 9, you have to use scale to draw lines. Students, draw very straight and precise and clean lines. Do not make zigzag lines. I hope you understood. You will do work like your teacher has done. Very good, students. Now, the next exercise is writing a letter. Okay, students. Here, Farooq has written a letter to a newspaper. फारूक ने एक लेटर लिखा है एक अखबार को. What he is writing in it? Let's read. On 25th May. Dear sir, I am writing to you about the wildlife in the mountains. Dear sir, मैं आपको लिख रहा हूँ जंगली जिंदगी के बारे में, यानी जंगली हयात के बारे में जो कि पहाड़ों में है. The problem is many hunters are killing the deer. As a result, there are not many deer left in the mountains. मसला ये है कि बहुत सारे शिकारी हरन का शिकार कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास पहाड़ों में ज़्यादा हरन नहीं बचे. In my view, we should make the mountains a national park. If we do this, the deer will be safe and the number of deer will go up in future. मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी नज़र में, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पहाड़ों को कौमी पार्क बना देना चाहिए. अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग हरन का शिकार नहीं करेंगे और हरन महफूज हो जाएगा और इसका मुस्तकबिल में तादाद भी बढ़ जाएगी. Yours sincerely, Farooq Ahmed. This is a sample letter they have shown you. Students, now what you have to do, look at number 3. There is written write to similar letters to a newspaper. आपको ऐसे दो खत लिखने हैं न्यूज़पेपर को, बिल्कुल इससे मिलते जुलते. यूज द फ्रेजेस इन इटैलिक्स फ्रॉम एक्सरसाइज 2 एंड नोट्स इन A and B. अब आपको क्या करना है कि ऐसे फ्रेजेस जो कि हाईलाइटेड हैं, मीन्स डार्क कलर में हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे आई एम राइटिंग टू यू अबाउट इन लेटर नंबर एक्सरसाइज 2. द प्रॉब्लम इज इन माई व्यू वी शुड, इफ वी डू दिस. ये जो डार्क बोल्ड आपको नज़र आ रहे हैं राइटिंग में, इन्हीं को इस्तेमाल करना है. बाकी आपको जो टॉपिक अपना जो आपको दिया गया है वो यूज़ करना है. अब आपको नोट्स कौन से यूज़ करने हैं? ए लेटर आपको लिखना है अबाउट फॉरेस्ट नियर अवर टाउन. जंगल हमारे कस्बे के नज़दीक. उसमें आपको ये सब यूज़ करना है. मैनी पीपल कट डाउन लॉट्स ऑफ ट्रीज, सेल द फायरवुड, नॉट मैनी ट्रीज लेफ्ट इन फॉरेस्ट, स्टॉप कटिंग ट्रीज, प्लांट यंग ट्रीज टू फॉरेस्ट, ग्रो बिगर इन फ्यूचर. मीन्स लेटर नंबर 1 किस चीज़ के बारे में है कि आपके शहर के नज़दीक एक जंगल है, लोग वहाँ से बिला इजाज़त दरख्तों को काट रहे हैं, उनको बेच रहे हैं. हमें दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, हमें नए दरख्त उगाने चाहिए. अब आपने लेटर लिखना है जिसमें ये पूरी थॉट्स लिखनी है और आपने यूज़ करने हैं ये वाले वर्ड्स, ये वाले फ्रेजेस जो कि लेटर नंबर 2 में यूज़ हुए हैं. वो कौन से हैं? 4 हैं जो आपको यूज़ करने हैं. आई एम राइटिंग टू यू अबाउट, द प्रॉब्लम इज, इन माई व्यू वी शुड, एंड द 4th वन इज इफ वी डू दिस. ओके स्टूडेंट्स, अब लेटर नंबर बी को देखें. रबिश ऑन सिटीज बीच, जो आपके शहर में साहिल किनारा है उसके ऊपर जो गंदगी है, जो लोग कूड़ा, जो लोग गंद किचरा वहाँ पे फेंकते हैं जिसकी वजह से वो जगह बहुत गंदी हो जाती है, उसके बारे में ये लेटर लिखना है आपको न्यूज़पेपर को. इसमें आप क्या लिखेंगे? मैनी पीपल हैव पिकनिक्स, नॉट टेक अवे देयर रबिश, डर्टी टिन्स, पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास, लॉट्स ऑफ फ्लाइज ऑन बीच, प्लास्टिक बैग्स एंड बॉटल्स, प्लेस,
lots of rubbish bins along beach. People put rubbish in bins and not leave it on beach. अब आप सब ने मोस्टली स्टूडेंट्स ने बीच विजिट किया होगा और आप देखते हैं कि बीच के ऊपर कितनी गंदगी होती है. People drink, people eat and they throw rubbish there. This is very bad habit. We should start from ourselves. If now you will visit beach, you will not throw anything there. Put all things in bin or put it with the bag you have and then come outside, throw those all rubbish into the dustbins present at your home or in street. Now students, I hope you will learn in this lesson, in these letters आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है. जो हमने शुड और शुडेंट वाली एक्सरसाइज की है उससे भी आप सीखें. जो भी आप पढ़ें उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उससे सीखें एंड बी अ बेटर पर्सन. ओके, सो लेट्स राइट दीज टू लेटर्स. स्टूडेंट्स, लेटर नंबर ए, डियर सर, which was about forest. Okay, dear sir, I am writing to you about the forest near our town. The problem is many people are cutting down lots of trees and are selling the firewood. As a result, there are not many trees left in the forest. In my view, we should stop cutting trees and we should plant some young trees too. If we do this, the forest will grow bigger in future. Yours sincerely, XYZ. Wow, what a letter. I hope you will also learn to write this letter. Okay students, if you can't write from here in your fair copy, inshallah we will provide you notes. You may get your notes from school and then you will write your fair copies neatly, nicely, properly. Let's see letter B. Letter B was about rubbish on beach. Okay. Dear sir, I am writing to you about the rubbish on the city's beach. The problem is many people are having picnics and are not taking away their rubbish. As a result, there are dirty tins, pieces of broken glass and lots of flies. On the beach, there are lots of plastic bags and empty bottles. In my view, we should place lots of rubbish bin along the beach. If we do this, people will put their rubbish in the bins and will not leave it on the beach. Yours sincerely, XYZ. You may write your name here. Wow, what a letter and what a learning outcome from this letter. What you have learned from here, that do not throw rubbish anywhere in the street, outside of your home, or if you go to any park or beach, you should not, means you shouldn't throw the rubbish on ground. Must use dustbins to you throw your rubbish. Next we have learnt, do not cut trees, plant more trees, because trees keep our environment safe. Trees keep our air clean. Now students, your homework is, you have to learn these letters and write in your homework copy. I hope you will be such a responsible citizen in future that you will write such type of letters to the authorities and to newspapers. I want to see you growing. I want to see you successful. Best of luck from my side and my all prayers are with you. Stay blessed. Allah Hafiz.